हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज मैं आया हूँ ट्रू नॉर्थ टाटा पीरागढ़ी में टू रिव्यू दिस द CNG वेरिएंट ऑफ द टाटा टियागो. So if I quickly talk about the key of this car, you just get a lock and an unlock button over here along with the follow me lamp. There is no button to actually open the boot of this car. And if I talk about the key in particular, the key looks very small and very quirky, but at the same time it is very dated. And yeah, the key has its own third, like in Mahindra car keys, which I really love, but I do not like the shape and the size of this key, to be honest. It need to be, a little bit more stylish when you're paying like 6.44 lakhs ex showroom for this car. So if I quickly talk about the front profile of this car, you get a piano black finishing over here along with the combination of chrome finishing. And यहाँ पे भी आपको टी शेप लोगो ज़रूर मिलता हुआ दिखता है, विच मेक दिस कार अगेन अ लिटिल बिट मोर प्रीमियम. एंड टाटा टी का भी यहाँ पे आपको लोगो मिलता हुआ दिखता है, विच आई रियली लव. यू गेट अ टोइंग हुक ओवर हेयर. इफ आई टॉक अबाउट द हेडलाइट यूनिट ऑफ दिस कार, योर इंडिकेटर इज लोकेटेड ओवर हेयर. यू गेट अ प्रोजेक्टर लैम्प ओवर देयर. एंड लो हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे एक हेलोजन बल्ब मिल जाता है. If I talk about the fog lamp of this car, the fog lamp is again a halogen unit and इसमें chrome borders है, which make this car again little bit more premium. And यहाँ पे भी आपको DRL मिल जाते हैं because BS6 के norms है, तो ये तो होंगी. And remember, this is not the phase 2 version of the BS6, this is just the normal BS6 version. So if I talk about the side profile of this car, you get the Apollo rubber over here, and this one is same as the one you get in the Tiago EV version. And this one is a 175/65 R14 rubber. And to be honest, I really love the look of this alloy. And this is not actually the alloy, ये steel cover है because of the cost cuttings, क्योंकि इस गाड़ी में ये ईज़िली निकल जाता है. एंड आई डोंट नो वाई द मैन्युफैक्चरर्स हैव स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग इन पर्टिकुलर. यार ये मेरे को पर्सनली अच्छी इतनी नहीं लगती है. यू ऑल्सो गेट दिस ब्रेक इन द फ्रंट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द रियर, you just get the drum brakes over here. And if I talk about the side mirror of this car, your indicator is located over here and you get a black side view mirror. And डोर्स में भी आपको ये क्रोम फिनिशिंग ज़रूर मिल जाती है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द rear profile of this car, the first thing I noticed is that you get this quirky looking deformer over here, which I really love. You also get a spoiler over here along with this black treatment, and brake light भी आपको यहाँ पे मिल जाती है. And आपको इस गाड़ी में शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है. You just get the normal antenna over there. And if I talk about the headlight unit, tail light unit of this car, actually the tail light unit is again a all halogen one. Your indicator is located over here, reverse light is located over here, and brake light भी tail light के अंदर ही integrated है along with this honeycomb effect over here. If I talk about the boot space of this car, so in order to open the boot of this car, you have to open the front door first, then you need to pull the lever like this, and तब जाके आप इस गाड़ी का बूट खोल सकते हैं, which is a little bit of hassle. तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगी because again this one is a CNG version of this car, and this one is a 12 liter CNG cylinder, and इसमें 60 लीटर गैस ईजिली आ जाती है. यू ऑल्सो गेट अ JK टायर स्पेयर रबर व्हील ओवर हेयर, विच इज़ जस्ट फॉर द कॉस्ट कटिंग परस्पेक्टिव अगेन. एंड आपको यहाँ पे पार्शियल ट्रे भी इस गाड़ी में मिल जाती है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द rear space of in this car, when I open the door does not open that wide enough, but थोड़ा बहुत हमारा काम हो ही जाता है. You get a Twitter over here, you get a
speaker over here. You can keep a bottle and some stuff over here. You can also keep a coin over here. And आपको इस गाड़ी में पावर विंडो पीछे ही मिल जाती है. And door handle bar भी chrome में finishing है. So once I get settled inside the car and I close the door, the door closes with a very great thud, to be honest. And if I talk about the rear seat comfort of this car, my legs are literally touching to the seat of this car and ये मेरे अकॉर्डिंग सेटल्ड है. अगर कोई मेरे से छोटी हेड का बंदा बैठ जाएगा तो थोड़ी सी जगह और मिल जाएगी. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द अंडर थाई सपोर्ट ऑफ दिस कार, अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी लैगी, टू बी ऑनेस्ट. एंड मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं बैठा हूँ. इफ़ आई टॉक अबाउट द हेड रूम ऑफ दिस कार, हेड रूम इज़ वेरी डिसेंट एंड आई हैव ample amount of space. You do not get any kind of armrest over here, as you can see. And आपके हेडरेस्ट भी फिक्स्ड है एंड सेंटर वाला तो है ही नहीं. एज ऑलवेज योर ग्रैब हैंडल बार इज लोकेटेड ओवर हेयर एंड इसमें कोई हुक आपको नहीं मिलता है. यू गेट अ हम्प ओवर हेयर टू एंड इट इज़ काइंड ऑफ बिग. सो इस गाड़ी में अगर 3 बंदे या मैक्सिमम 4 बंदे ही बैठे तो ही सही है. ये गाड़ी 5 बंदों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है. और अगर मेरे से एडल्ट बैठे हों सारे के सारे तो 3 ही काफ़ी हैं, चौथे को उठाने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द एरीनेस इन दिस कार, द कार इज़ वेरी एरी एंड लुक्स वेरी प्रीमियम टू मी because of this big window again, and also because of the updated dashboard over there. So now coming to the most awaited part or the segment of this video, that is the driver side. So when I open the door of this car, the driver side door open very wide enough, to be honest. And if I talk about the door panel of the driver side, again you get a chrome door handlebar over here. You can adjust your side view mirror using these buttons over here. You get auto down for the driver side, but इसमें auto up नहीं मिलता है. पावर विंडोज बटन भी यहाँ पे लोकेटेड आपके हो जाते हैं. You can keep some coins over here and you can keep 2 bottles and some documents over here too. Your speaker is located down here. And if I talk about the seat adjustment function of the driver side, इसमें आपको height adjustable functions भी मिल जाते हैं ना. आगे पीछे तो सीट easily हो ही जाती है. And one very cool thing about the AC vent of this car is कि ये AC vent गाड़ी के कलर्स से कॉन्ट्रास्ट है टू मेक दिस कार इवन मोर प्रीमियम. एंड आपको इस गाड़ी में ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है. यू हैव टू पुट द की इनसाइड लाइक दिस एंड देन हैव टू स्टार्ट द कार. एंड अगर आप देखें, द कार लुक्स वेरी प्रीमियम एंड कूल वंस इट स्टार्टेड. सिंस बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा मैं AC ज़रूर चलाऊँगा इधर. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इन दिस कार, द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इज़ अ ऑल डिजिटल dial. Your CNG fuel pump meter and the normal fuel pump meter is located over here. Your RPM meter is located over here. And आपको डिजिटल स्पीड इस गाड़ी में ज़रूर मिलती ही दिख जाती है. एंड इस गाड़ी में आपको TPMS सेंसर्स बिल्कुल नहीं मिलते हैं. आपको इसमें ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड कितनी रेंज है, यही सब चीज़ें ही मिलेंगी. एंड दैट्स इट. बट देयर इज़ वन कूल थिंग दैट you can actually switch on and off the DRL of this car from the dials located over here. And trust me, ये बहुत ही needed feature है, because again अगर आपका DRL चल रहा है और आपकी गाड़ी बंद है तो बैटरी डेड easily हो सकती है. Your headlight lever is located over here too. And in order to handle the wiper of this car, you get dials over here. And if I talk about the steering wheel of this car, again the steering wheel has the ray function but not the reach function. The Tata logo is located over here. And in order to handle the infotainment system of this car, you get buttons over here. You can increase or lower the volume, change the track, pick a call, cut a call. and आपको pick वाले में voice assist and cut वाले में mute का ऑप्शन मिल जाता है. और आपको गाड़ी का हॉर्न बजाना तो आपको यहाँ से ही बजाना पड़ेगा, बिकॉज सेंटर में नहीं मिलता है हॉर्न का ऑप्शन.
If I talk about the infotainment system of this car, this one is a Harman Kardon infotainment system, and once I go under setting, आपको इस गाड़ी में IRA फंक्शन आई थिंक नहीं मिलता है, आपको सिर्फ अप्रोच लैम्प्स के ही फंक्शन मिलते हैं एंड दैट्स इट। एंड आपको इस गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ईजिली मिल जाता है, विच इज़ वेरी वेरी कूल। एंड इन ऑर्डर टू लॉक एंड अनलॉक द कार यू गेट द बटन ओवर हेयर, एंड गाड़ी भी शायद हॉर्न बजाता, आई डोंट नो वाई बट बजाता। एंड अगर आपको CNG में गाड़ी शिफ्ट करनी है तो उसके लिए बटन यहाँ पे मिल जाता है। यू कैन स्विच ऑन द defogger और द रियर fog light of this car using this button over here, and the AC unit is an all electric unit again, and this one looks very very cool and simplistic to me at the same time. You get type A charging socket over here along with the 12 volt charging socket, but आपको यहाँ पे अब aux का बटन नहीं मिलता है। You can store a phone and some stuff over here, and gear knob का डायल आपको ऐसा मिल जाता है, but again it is a soft प्लास्टिक, ये लेदर में नहीं मिलता है, सो गर्मी में ये बिल्कुल ख़राब और चिपचिपा हो सकता है। You get 2 cup holders over here along with the handbrake over here, and I think ये वाला एरिया ना यार इन्होंने जो कीलेस जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली इलेक्ट्रॉनिक की आती है उसके लिए ही बनाया था, बट सिंस उन्होंने दिया नहीं तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द डैशबोर्ड ऑफ दिस कार, द डैशबोर्ड इज अगेन hard plastic, but it looks very very cool. And in order to open the dashboard of this car, you get a button over here, and dashboard is very very deep to be honest, and you can store some amount of stuff at an ease. You do not get auto dimming inside the rear view mirror, this is just the manual one. You get ticket holder over here, and your mic is located over here too, and आपको यहाँ पे भी स्लिप होल्डर ज़रूर मिल जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द पैसेंजर साइड, आपको यहाँ पे सिर्फ एक मिरर ही मिलता है, एंड इसमें लाइट नहीं है। एंड ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द ड्राइवर्स साइड, A and B pillar can be a hassle for you because they are very very wide, and it can create a little bit of chaos when you are scrolling through the traffic. So if I talk about the engine or the heart of this car, so this one is a 1199cc engine, and this one is a 3-cylinder unit, not the 4-cylinder one. So refinement is a big issue in the Tata Tiago, and this car becomes very loud when you are driving this car very very rash. And this car also get a power of 72 bhp and 95 Nm of torque at a very very laggy 3500 rpm. So initial punch and scrolling around the traffic can become a little bit of a hassle, but once this car starts going, it is very very fast again. And इंसुलेशन के लिए भी आपको यहाँ पे ये कपड़े का फोम मिल जाता है। This car also get a fuel capacity of 60 liters along with the 12 kg CNG cylinder, so mileage is not an issue, and company also claims a mileage of 26 kmpl, which is very very great. And ये गाड़ी easily टक्कर देती है मारुति की बहुत सारी गाड़ियों को। And now coming to the final verdict of this car, whether I would like to go for this car, this can become one of the option, but when I'm paying like 6.44 lakhs, I can also look at other options like the i10 Grand and also the Maruti Suzuki Swift, because that car has a lot more space and वो गाड़ी इसके जितने माइलेज ईजिली दे देती है। बट अगर सेफ्टी इज़ माई कंसर्न, आई वुड रादर चूज़ द Tata Steel rather than going for the Japanese/Indian Maruti car, जो अपने स्टील के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो अगर आपको कोई भी गाड़ी या टाटा की ये गाड़ी लेनी हो, यू कैन चेक आउट ट्रू नॉर्थ टाटा पीरागढ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं फिर से आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके। टिल देन, पीस।